पिला माने हमें ऑप्टिक्स जो छाड़ी थिले से हमें स्टार्ट करिवा कौन कौन ऑप्टिक्स में पढ़ुଥିଲେ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ुଥିଲେ स्फेरिकल मिरर पढ़िचे प्लेन मिरर पढ़िचे रिफ्रैक्शन थिन लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला पावर ऑफ द लेंस मैग्निफिकेशन लेंस और मिरर दुटार मैग्निफिकेशन पढ़िचे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेटा भी पढ़िचे एबे हम जेबा कोड के प्रिज्म प्रिज्म कौन पिला माने तमे प्रिज्म टा टिके भल से बुझो तमर प्रैक्टिकल रे भी प्रिज्म अछि सेकेंडरी प्रैक्टिकल रे प्रिज्म अछि प्रिज्म टा एटा गोटे प्रिज्म नॉर्मली प्रिज्म टा कोतरे तयारी हेता है ग्लास रे तयारी हेता है प्रिज्म टा ग्लास रे तयारी हेता है प्रिज्म रे प्लग केतरा सरफेस अछि देखला गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा सरफेस अछि ठीक अछि जे कोनोसी गोटे ट्रांसपेरेंट मीडियम जहा दे के लाइट टा पास करि पारिबो ताकू यदि एटा पर शेप दे दबो तमे त से गोटे प्रिज्म हे जे बुझा पड़ुछि तो बेसिकली प्रिज्म गोटे ए वेज शेप्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two inclined surface पिला माने प्रिज्म तमे माने एमती देखुथिबो एटा हमर गोटे प्रिज्म मान लो प्रिज्म रा नाम दे देउची ए बी सी डी ई एफ देखो पिला केतरा सरफेस हला ए बी सी गोटे सरफेस बी सी डी ई गोटे सरफेस ए बी ई एफ गोटे सरफेस डी ई एफ गोटे सरफेस पांचटा सरफेस अछि पिला माने ए जो एंगल देखुचो दुईटा इंक्लाइंड सरफेस दुईटा इंक्लाइंड सरफेस को दुईटा इंक्लाइंड सरफेस ओटला ए बी ई एफ ओटला ए सी डी एफ ए दुईटा इंक्लाइंड सरफेस जो एंगल फॉर्मेशन करूछंदी त हमें एंगल ऑफ प्रिज्म बोली कहिबा पिला माने ए दुईटा सरफेस माने कोटा कहले ए सी डी एफ आ त पछटा जस्ट पछटा ए बी ई एफ ए दुईटा सरफेस को हमें कोन कहबा पिला रिफ्रैक्टिंग सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस एटा को कोन कहबा पिला माने कहला रिफ्रैक्टिंग एज ठीक अछि पिला ए जो देखो ए बी सी तार पछटा जस्ट डी ई एफ एमान को कहबा प्रिंसिपल सेक्शन ठीक अछि पिला सो आमे जदि गोटे प्रिज्म नबा एउठो देखिबा प्रिज्म को तमे माने जदि देखुथिबो प्रिज्म को तले प्रिज्म रो एटा ही तुमको देखा जाउथिबो केवल प्रिंसिपल सेक्शन ही देखा जाउथिबो तो आमे जहां भी डायग्राम करिबा जहां भी प्रिज्म को नेकी जो लॉन्ग क्वेश्चन अछि सेटा को जदि डेरिवेशन करिबा केवल एटा को ही देखिबा बुझियो छी जिबा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म refraction through prism बा सेटा को कोनती प्रिज्म फार्मूला कोन mu is equal to sin a plus dm by 2 by sin a by 2 पिला कंफ्यूज हबनी मो एटा को dm लिखुची बहिरे में भी एमते डेल्टा m लिखि देबो एका कथा dm लिखले चलिबो डेल्टा m लिखले चलिबो देखिबा
सपोज एटा हमर गोटे प्रिज्म प्रिज्म रे एटा को सेक्शन पिला माने प्रिंसिपल सेक्शन नाटा कोन दैछे ए बी सी पिला माने रे डायग्राम को भल से बुझो बहुत इजी लागिबो मानि ने एटा हमर गोटे इंसिडेंट रे तो मु गोटे कोन ड्रा कली पिला एठी नॉर्मल ये जो नॉर्मल मु ड्रा कली नाटी तार n1 देली एटा हला हमर कोन पिला इंसिडेंट रे नॉर्मल सहित जो एंगल करे सेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक अछि माने ने जो प्रिज्म अछि प्रिज्म रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला म्यू तो फर्स्ट मीडियम यू टू चेंज करिवो मानि ने एटा एयर मीडियम अछि जोटा कि रेयर मीडियम एटा किछ डेंसर मीडियम जार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किछ म्यू अछि ताहले लाइट कोन हबो एबे रेयर रु डेंसर को जाउछि प्रैक्टिकली से एमती जीवा कथा एमती जीवनी कोन हबो बेंड हबो कुआड को बेंड हबो टुवर्ड्स द नॉर्मल आड को बेंड हेलो ठीक अछि पिला मानि ने मु एटा को ओ नेली एटा ओपी तो ओपी हला मोरो इंसिडेंट रे फर्स्ट एबी सरफेस ऊपर जते बेले पिटी हला एबी सरफेस रु से सेकंड मीडियम को बा डेंसर मीडियम को जाउछि तो रेयर रु डेंसर को गले लाइट बेंड हबो कोड को बेंड हबो टुवर्ड्स द नॉर्मल को बेंड हला मानि ने देके कोठी पहुंचिला क्यू पॉइंट रे पहुंचिला क्यू पॉइंट रे फुनी से पिटी हला फुनी बे से मीडियम चेंज करी मु बे फुनी गोटे कोन कली पिला नॉर्मल ड्रा कली नॉर्मल n2 एबे कोन करबा पिला एबे ए लाइट डेंसर रु रेयर को जाउची तो नॉर्मल थारु दूरेई जीवो से एमती जीवा कथा दूरेई गला ठीक जदि मु रे को पछुआ ड्रा करबी ए माने पछे रे एठी मिसिबे तमे मार्क करिवो जदि ए प्रिज्म को जदि तमे काढी दबो तले रेटा भी सीधा जीवा कथा प्रिज्म रखिलो ए रेटा इठी आसिला त माने प्रिज्म ए रे को एतिकी बंका करिछि जोटा कमे कहिबा एंगल ऑफ डेविएशन डी बोली जदि प्रिज्म न थांता ए रे एमती सीधा जाई थांता प्रिज्म आसीछि रे को दुई थर रिफ्रैक्शन हे एटा आसीछि एंड जेति की बेंड हेछि त कमे कहिबा कोन एंगल ऑफ डेविएशन एतके डेविएशन हेछि ठीक अछि पिला पिला एटा कमे कहिबा इंसिडेंट रे कहा पाई एबी पाई एंड एबी पाई पीक्यू टा कोन रिफ्रैक्टेड रे बोलसे बुझुता एबी पाई एटा कोन इंसिडेंट रे एटा कोन पीक्यू टा कोन रिफ्रैक्टेड रे एंड ए सरफेस पाई एटा इंसिडेंट रे एटा रिफ्रैक्टेड रे बट होल ए तीनटा रे को जदि मार्क करिवो ए एयर रु गला ग्लास रु गला एयर त माने जो मीडियम रु जाईथिला पुनी से मीडियम को पळेला तो एटा को हम कहबा इमर्जेंट रे का होके जदि मल्टीपल रिफ्रैक्शन पारे गोटे लाइट जो मीडियम रु जाईथिबो पुनी से मीडियम को फेरी जिवो सही रेटा को हम कहबा इमर्जेंट रे तो एटा को हम कोन कहबा पिला इमर्जेंट रे ठीक अछि पिला एबे जीवा बुझिबा एटा ला कोन एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल सहित रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल कला सेटा ला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 नॉर्मल सहित एटा इंसिडेंट रे कहा पाई एसी पाई एटा कोन इंसिडेंट रे ये जो एंगल कला एटा सपोज r2 ठीक एंड इमर्जेंट रे जो एंगल कला सेटा को एंगल ऑफ इमर्जेंट ई बोली कहबा ठीक अछि बहुत बढ़िया एबे टिके ध्यान दियो ना टिके दे देबा ए पॉइंटर नाम किछि m दउछि ए पॉइंटर ना किछि n दउछि एटा ला एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल A
पिला टिके ध्यान देलो एई एंगल टा प्योर ज्योमेट्री बहुत किछि रॉकेट साइंस नाही एटा आई टोटल टा केते आई एटा केते r1 तो एटा केते हबो i माइनस r1 टिके बड़ बड़ लिखुचे जदि देखा जाउ नथिबो तो i माइनस r1 हबो पिला एटा i तो टोटल टा i एटा जदि r1 तो एटा गेला i माइनस r1 एटा e एटा r2 ताले एटा केते हबो पिला e माइनस r2 बुझेला बुझेला आ उथरे जिबा एटा हला i तो टोटल एंगल ता हबो i एटा होची r1 तो एटा ताले बंची जिवो केते i माइनस r1 एटा हला e टोटल ता हला e एटा हला r2 तो एटा लगते e माइनस r2 पिला हम एटी नॉर्मल नहींचे माने ए एंगल ता केते पिला 90 डिग्री तो ए एंगल तो 90 डिग्री ए एंगल ता केते 90 डिग्री तो ए एंगल भी 90 डिग्री ध्यान दियो पिला माने एटा लिबी दोची देखो इन ट्रायंगल ओ ट्रायंगल कथा में जाउची पिला MPQ ए ट्रायंगल को देखिलो पिला ट्रायंगल रे MPQ ट्रायंगल रे एठाला बहिस्थ कोण ए दुटाला दूरवर्ती अंतस्थ कोण तले मु लिखि परिबी बहिस्थ कोण हला दूरवर्ती अंतस्थ कोण समष्टि सहित समान एटा स्कूल लाइफ रे पढचा तो मु कोन लिखि परिबी d = i minus r1 plus e minus r2 that implies to d = i plus e minus कॉमन नै जेबा r1 plus r2 ठीक अछि इक्वेशन नंबर 1 बुझा पडुची बढ़िया एबे देखो पिला हम ओटे काम करिबा ए क्वाड्रिलैटरल को जिबा चतुर्भुज को क्वाड्रिलैटरल APNQ क्वाड्रिलैटरल APNQ को ध्यान दियो ताले मते गोटे कथा कहलो ए एंगल टा केते करी 90 डिग्री ए एंगल टा केते करी 90 डिग्री ताले एटा मिसर भी 90 है एटा ताले एंगल ऑफ प्रिज्म ए एटा 90 चारटा जाको एंगल मिसले 360 हेबे एटा 90 180 पळेला त माने ए दुटा मिसले 180 हेबे तो a plus PNQ is equal to 180 डिग्री इक्वेशन नंबर 2 बुझा पडुची बढ़िया एबे चलो आगु बुझिबा अगेन पिला ट्रायंगल PNQ को देखो PNQ रे R1 plus R2 plus PNQ is equal to 180 degree R1 plus R2 plus PNQ is equal to कते 180 degree इक्वेशन नंबर 3 एबे इक्वेशन 2 और 3 को जदि मु कंपेयर करिवि मो पाखरा से पहुंची जिवो A is equal to R1 plus R2 इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन 2 और 3 राइट साइड रे 180 अछि तो लेफ्ट साइड जो समान हबो PNQ को खाई गला तो A इज इक्वल टू कते गला R1 plus R2 नाउ तले D इज इक्वल टू कते जिवो I plus E minus A that is implies to A plus D is equal to I plus E A plus D is equal to I plus E इक्वेशन नंबर 5 दे दो ए पर्यंत पिला बुझा पड़ुची जिबा आगु देखो हमें गोटे ग्राफ प्लॉट करबा पिला माने मते लिभिया को पड़िबो टिके मते लिभिया को पड़िबो हमको ए दुटा निहाती दरकार ए हला कोन r1 + r2 a + d हला i + e ऊपर तो हम लिभि दोछिला देखो आमे कोन कोले गोटे ग्राफ प्लॉट कले ए ग्राफ ता तुम प्रैक्टिकल रे करिवो काहा भीतर ग्राफ में प्लॉट कले एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन पिला माने आमे एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कले एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होची एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कले एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होची चेंज कला पर मु गोटे ग्राफ प्लॉट कली ए ग्राफ ता तुम प्रैक्टिकल रे करिवो एंत टाइप रो गोटे ग्राफ आसीबो
ए ग्राफ कौन कहूची हम ग्राफ कहूची स्टार्टिंग रू आमे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जते बढ़ी बढ़ी चलिले एंगल ऑफ डेविएशन कमी कमी चलला सर केमथि हला एक्सपेरिमेंटल तमे प्रैक्टिकल रे करियो आमे एंगल ऑफ इंसिडेंस को जते बढ़ीबा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़िला 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 सॉरी कमिला 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 एठी गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस रे एंगल ऑफ डेविएशन ता मिनिमम जोटा कमे कहबा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन गोटे पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन ता मिनिमम एंड सेटा कमे कोन कहबा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें एक्सपेरिमेंटली देखिले जो टाइम रे डेविएशन ता मिनिमम से टाइम रे कोन होची नहीं आई टा ए सहित समान हो जाउची r1 टा r2 सहित समान हो जाउची पहला माने को कंडीशन रे एट मिनिमम डेविएशन लिखि देबा एट मिनिमम डेविएशन पहला माने दुई प्रकार डेविएशन अछि गोटे मिनिमम और अछि मीन मीन कहले एवरेज जोटा आगु पड़िबा एटा मिनिमम कथा में कहूची एट मिनिमम डेविएशन r1 is equal to r2 मानी नहीं सेटा r बोली आउ कोन पिला माने I is equal to E ता माने कोन हेथिबो जदी r1 is equal to r2 हेथिबो तल कोनटा हेथिबो ना एटा ए जो बेस नै कि बेस ए बेस से तो पैरेलल हेथिबो सो दैट r1 और r2 समान हेथिबो यदि r1 r2 समान r नहीं गले I is equal to E नहीं गले ना एठी नहीं जिबा पिला ना a is equal to तले केते हबो 2r ही जिवो तले r is equal to केते ही जिवो a/2 ही जिवो I is equal to E again पिला a plus dm is equal to 2i लिखि दउची तले I is equal to केते ही जिवो a plus dm/2 गोटे पाइले I is equal to केते a plus dm/2 r is equal to केते a/2 now एबे इट इज स्नेल्स लॉ पकेबा स्नेल्स लॉ according to Snell's law it is Snell's law पकेबा हम जानते Snell's law कोन sin I by sin r इथे r1 is equal to refractive index of कोठी को जाउची कोठु आसिला देखो कोठी के जाउची सेकंड मीडियम को जाउची कोठु आसिला फर्स्ट मीडियम को आसिला तो एटा को लिखि परिबी μ2 by μ1 तो μ1 फर्स्ट मीडियम तो एयर अछि तो μ1 रे वैल्यू 1 हे गेला μ2 रे वैल्यू μ हे गेला त हम डायरेक्ट लिखि दोछि केते पिला माने μ so that is implies to sin I जगह केते a plus dm/2 r1 जहां r2 से है तो हम लिखि दोछि sin r जगह sin a/2 is equal to केते μ पिला माने बहुत सहज लंग क्वेश्चन थरे दुई थर खाली रीडिंग कर देले भी मन रह जाओ रे डायग्राम ता इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्लास देखियो।